Hello, students, and welcome to English with KK English Room, where English is fun. So, what is the fun today? Today, we are back with a poem from First Flight, and the poem name is The Ball. Yeah, it seems very easy, The Ball, and it's written by John Berryman. So, let's see what we are going to do in this video today. As we always divide our lesson into various parts. So we will start with about the poet, then we will move towards stanza wise reading recitation of the poem plus meaning. Next will be literary devices, and the last we will sum up with the theme. So let's move about the poet. So John Merriman was an American poet and scholar born in McAllister. He was a major he was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and is considered a key figure in confessional school of poetry. So basically, John Berryman was an American poet. And what is special about this poem? What makes the poem so special is the theme. So let's start the recitation and then we will discuss the meaning. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. There it is in the water? Exclamation sign was there. So this poem by John Berryman is all about a young boy who loses his ball. So let's explain a little bit in Hindi also. तो इस पोएम में क्या कहते हैं जॉन बेरीमैन एक बच्चे के डिस्क्रिप्शन है. जब पोएम स्टार्ट होती है तो एक बच्चा है वो जो बॉल से खेल रहा है और सडनली क्या होता है उसकी बॉल पानी में चली जाती है. ठीक है, बच्चों के साथ होता है, पानी में चली जाती है, बट ये ऐसी जगह बॉल चली गई है जहां से उसको लेना इम्पॉसिबल है. हार्बर एरिया है, वहां से वो उठा नहीं सकता है. सो यूजुअली लूजिंग अ बॉल वुड नॉट बी एन इशू. बच्चों की जाती है, हम उठा लेते हैं, फिर खेलते हैं. बट हियर इट इज अंडरलाइन ग्रीवेंस दैट कॉजेस द बॉय टू बी so upset over his ball. But the boy is very upset. देखता है कि वो बॉल उठा नहीं पाएगा एंड the the grief, the sadness inside the boy was too much. और वो सोच रहा है वो क्या करेगा उसकी प्यारी सी बॉल जिससे उसने बहुत दिनों से संभाल के रखा था और बहुत सालों से वो खेल रहा था, वो गुम हो गई. The boy loved the ball and saw it as his possession. और आप किसी को possess कब करते हो? जब आपका वो बहुत प्यारा होता है तो आप उसको possess करते हो. और वो उसकी बहुत बड़ी possession थी और वो उससे बहुत प्यार करता था उस बॉल से. It was linked to the memory of the day when he played with it. और उसकी सारी मेमोरीज, सारी यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी. और क्या हुआ, वो बॉल उसने खो दी. All memories gone away. All memories have gone away from his sight because he has lost his ball. The boy's ball went into the water of the harbor. The boy is very troubled at the loss of the ball. So first stanza में हम देखेंगे कि बॉल से खेल रहा है बच्चा और बॉल चली गई, इसका डिस्क्रिप्शन है. आगे क्या होता है, let's see. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. So
पोएट कहते हैं कि नो यूज, कोई मतलब नहीं है उस बच्चे को बताने का कि कोई और बॉल्स भी हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो ग्रीफ है वो उससे इतना शेकन हो चुका है कि वो वहाँ रिजिड होके खड़ा हो गया है, हिल नहीं रहा है, ट्रिम्बलिंग, कांप रहा है और अपने बॉल को एक टक देख रहा है, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। और उसकी सारी यादें यंग डेज की, चाइल्डहुड की, सारी कहाँ चली गई है? हार्बर में, पानी में चली गई है। और आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और पोइट कहते हैं मैं उसे बिल्कुल दखल नहीं दूंगा उसके इस ग्रीफ में। क्यों? आगे पता चलेगा। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। द पोइट इज सेइंग दैट देयर आर अदर बॉल्स बट ही इज स्टक टू हिज ओन पोजीशन, हिज ओन बॉल। उसका उसे अपनी ही बॉल चाहिए, जो क्योंकि वो उसका पोजीशन था, उससे उसका प्यार अलग सा था, इसलिए उसे दूसरी बॉल उस पोजीशन को फुलफिल नहीं कर सकती, वो जो गैप आ गया उसको फुलफिल नहीं कर सकती। तो इसलिए कहता है पोएट कि देयर इज नो यूज ऑफ अनदर बॉल। He's trembling, staring down, and he has lost his ball, and grief has taken hold of him. और वो कांप रहा है, एक टक देख रहा है और अपने ग्रीफ में बहुत दुखी है। उस लॉस से वो बहुत ज्यादा परेशान है, हिल चुका है। Now the poet watched the boy who had plunged in grief at the loss of his ball. अब नेक्स्ट देखते हैं। A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy. So हम ऐसा देखते हैं, a dime another ball is worthless. और पोएट कहते हैं कि there is no use of taking the another ball. It is totally worthless, useless. कोई मतलब नहीं है दूसरी बॉल लेने का। नाउ, और वो दखल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बच्चा should understand his first responsibility in the world of possession. उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आए कि इस वर्ल्ड में जो पोजेशन है, हमारी चीजों से लव है, हमारी चीजों पर जो अधिकार है, वो कभी खत्म हो सकती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और लोगों से उनकी बॉल छिन जाएगी, लोगों से उनका पोजीशन छिन सकता है कभी भी, इसलिए इस चीज को रेडी रहना चाहिए। दैट्स व्हाई पोएट ने कहा था कि आई विल नॉट इंट्रूड। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हम। Another ball is worthless to the boy as he cannot love it the same way as the lost one. और ऐसा होता है कि आप किसी की पूर्ति नहीं कर सकते हो, आपके जो जैसे आप किसी को बहुत प्यार करते हो और वो चला जाता है, आपका फ्रेंड है या आपका कोई भी पेट है, वो चला जाता है, तो आप, ठीक है, आप कई बार उसको रिप्लेस कर देते हो, बट जो पोजीशन, जो लव आपका पहले के साथ था, वो नहीं रहता। इसी चीज को वो कहते हैं कि वी कैन नॉट रिप्लेस द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वन। Now it seemed that the boy had the ball for a long time. The poet was also wanted the boy to realize the feeling of loss. और पोएट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पोएट ने इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे अपने लॉस को वो बच्चा समझे और उस चीज को रियलाइज करे और इस लॉस की फीलिंग को एक्सेप्ट करना सीखे, उस ग्रीफ को एक्सेप्ट करना सीखे लाइफ में, क्योंकि वो लाइफ की उसकी पहली रिस्पॉन्स, पहला ग्रीफ वहां से स्टार्ट होता है। में आप कह सकते हैं फेलियर, या इसकी बहुत सारी मीनिंग है एक्चुअली। लास्ट है, balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well. He's learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know.
and most know many days how to stand up. Now, in this stanza, he's saying that no one buys a ball back. और यहाँ एक्चुअली बॉल इज नॉट फिजिकल कि वो बॉल गुम हो गया हम दूसरी लाएंगे. It this ball contains a very broad meaning here. It's a symbolic meaning. The ball here means your possession, your belongings, your success, everything. And the poet is saying that money is external, and that's why the poet wants that the boy should understand this thing, that money cannot buy your possession, the thing which you have lost. Money cannot buy it. पैसे हैं आपके पास, लेकिन आपकी जो प्यारी चीज है वो गुम हो गई है, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है. उस मनी वापस नहीं ला सकती. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप. और ये भी कहते हैं पोएट कि मुझे उस लॉस को समझना होगा, उस बच्चे को, कि हम स्टैंड अप कैसे करेंगे अपनी चीज को खत्म होने के बावजूद भी. लॉस को एक्सेप्ट हम कैसे करेंगे अपनी लाइफ में. दिस इज व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, एंड दिस इज व्हाट एवरी मैन मस्ट नो. सो लास्ट की लाइन से मैं पता चलता है कि इज टॉकिंग अबाउट एवरी मैन, एवरी ह्यूमन. सो the poet says that the boy must be sad and grim, but he has to understand that loss is the part of life and he has to move forward. The message is a sound one, that one must learn to accept loss and the resultant pain with courage, as life offers things but also takes them away. मतलब कई बार होता है कि कई बच्चे या कई बड़े या कोई भी है, किसी अपने बहुत ही नियरेस्ट वन के लॉस की डेथ पे या सेपरेशन से इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसको अपनी लाइफ में कुछ नहीं दिखता है पेन के अलावा, और वो डिस्करेज होके अपनी लाइफ को जीना छोड़ देता है और होपलेस होके बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है. इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे पोम में यूज किया गया है बॉल का. और पोएट ने कहा है कि we should have the courage to accept the losses in our life, to accept the failure in our life, to accept the loss of our near one, our dear one, our lovely things, everything included here. The loss is hurtful, it's hurtful, but it's as much a part of life as finding something, and one must learn to take it in one stride. और ये हर्टफुल है, बहुत हर्टफुल है. ये बहुत हर्ट करेगी चीज कि हमने अपने बहुत ही मन पसंदीदा या बहुत ही प्यारी चीज खो दी. लेकिन दिस इज लाइफ इज कॉल्ड लॉस्ट एंड फाउंड हियर. हमें कुछ मिलता है तो कुछ खोता है. सो वी कैन नॉट स्टॉप देयर, वी हैव टू कैरी ऑन, वी हैव टू मूव ऑन देयर. सो लेट्स मूव टू लिटरेरी डिवाइसेस. एक तो बहुत ही बेसिक डिवाइस आपको दिख रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पर्सोनिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन वो स्पीच होती है जहां हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एज अ पर्सन यूज करते हैं और उसको ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करते हैं. यहाँ पे बॉल बोली गई है मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जैसे मजे से खुशी खुशी घूम बाउंस कर रही है. और मैरी मैरी कौन हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है. मैरी मीन्स हैप्पी एंड इट इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज गिवन टू द बॉल. नेक्स्ट इज मेटाफर है. मेटाफर व्हेन we don't use like और as का यूज किए बिना हम जब कंपेयर करते हैं किसी चीज को तब मेटाफर यूज करते हैं. यहाँ पे ball will be lost always. Ball here symbolizes the possession which we lose. So we also refer to the childhood which is lost, never comes back. So actually if ओवरऑल पोएम को अगर हम देखें तो ओवरऑल ही पोएम में मेटाफर का यूज किया गया है. बॉल एज लाइफ.
ball as your memories, as your possession. Now alliteration का use है has, his, what, buys, ball, back. alliteration हम कब use करते हैं? जब हमारा initial letter use होता है, consonant होता है और initial letters में rhyming sound आता है, तब हम alliteration use करते हैं initial में. And next is apostrophe. बहुत ही important figure of speech है. when 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 we address to something, a person or dead or physically not present there, then we call then we say we have used a apostrophe. In this poem the poet says that the ball will be lost always, little boy, and the whole poem the poet is addressing to the boy who is not physically present there. So apostrophe has been used here very nicely. Next is symbolism. It is the use of symbols to represent ideas or qualities in the poem. Ball and balls represent childhood, possession, and even the father of the it. So कहीं ना कहीं पोएट के खुद के, आप कह सकते हैं बायोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं इसको, इस पोएम को, जब उसने फादर को अपने खो दिया था, उसके ग्रीफ को एक्सेप्ट करने के लिए भी उन्होंने पोएम लिखी थी. तो अब हम लास्ट वी हैव रीच्ड टू द थीम, जो अभी तक आपको बिल्कुल पूरी समझ आ गई होगी. थीम स्टार्ट करते हैं. वन फील्स ट्रेमेंडस ग्रीफ एट एनी काइंड ऑफ लॉस, जो बहुत ही नेचुरल है. हमें कुछ चीज गुम हो जाती है तो हम बहुत उस चीज की फिक्र करते हैं, उसके लिए रोते हैं. बट हमें क्या चाहिए? वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ वंस लव्ड वंस एंड अदर वर्ल्डली पोजीशन. It is the nature of life that things are found and lost too. The last छूट गया. So we have to take loss of our stride and be brave enough to understand and also accept the inevitability of loss. Inevitability मतलब जो होना ही होना है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो. Inevitable है, जो होना ही होना है. सो लॉस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उस चीज को हम खत्म नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं? हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं. और एक्सेप्ट करिए, मेरे लिए एक्सेप्ट करिए उस चीज को, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी. और अगर आप ग्रीफ के साथ, सैडनेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी होगी. ओवरऑल इस पोएम का मतलब ये था. सो दैट्स ऑल. सो डोंट फॉरगेट टू like, subscribe. Till then, bye, and I'll come with another chapter next class. Okay.